My name is Khushbu and I'm your teacher for the course BEGLA 135 English in Daily Life course introduction. So first of all, we are going to introduce you to the course, that what is there in this particular course. So let us begin with our introduction. So this course includes various blocks, and the first one here comes with greetings and goodbyes. So in conversation in our day to daily life, have you ever felt like, okay, you feel word struck and you are not able to communicate your ideas, you feel tongue tied? ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे हमें कुछ बोलना है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे होते उस टाइम पर. तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, तो डोंट वरी, इन दिस कोर्स यू विल गेट टू नो हाउ टू कन्वर्स इन आवर डेली लाइफ necessities. So this course will help you to do the conversation in English and how to begin that your conversations in English. You will also know how to do particularly enhance your reading, writing and listening skills. So the first one, the block one, deals with greetings and goodbyes. सबसे पहले जब हम कन्वर्स करना किसी से स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे किसी को ग्रीट करना है एंड कैसे हमें उसको गुड बाय बोलना है. That is really important. Okay, so when I started this video, I started with hi, and then I said, okay, when I will be ending this video, we generally say, okay, goodbye everyone, see you. So all these would be included in this. In the world around us, you will get to know about different atmospheres. Okay, what is going around you, उनके बारे में कैसे बात करना है. Media and entertainment is also again a very important part in our daily lives. Media plays a crucial role. Okay, and how in that media, how journalism works, new vocabulary related to entertainment world, TV, television would be taught to you. Then burning issues is all about latest issues or hot topics going around you. So all these things would be covered. And now let us just discuss about them one by one. So here is greetings and goodbyes. So greeting and goodbye particular topic will have several subunits. फर्स्ट वन हियर इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग कन्वर्सेशन. आप सीखेंगे कि कैसे हम एक कन्वर्सेशन को बिगिन करते हैं और उसको एंड करते हैं बहुत अप्रोप्रिएटली. यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि what are etiquettes, how to particularly follow and express those etiquettes. Social small talk is about general ideas or initiative to sustain a conversation with someone, how to pick or avoid topics depending on the degree of their intimacy. कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, तो उनके बारे में कैसे हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है. So that all would be covered in small talk. Then comes feelings. Okay, so feelings are really important, your emotion, how to express them. Okay, so you will get to know how to express and write, read about, you will also read about emotions and you will know how to write about your feelings, how to express your feelings to some other person with help of different tones. ओके, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, जब हम खुश होते हैं तो हम कैसे किसी को एक्सप्रेस करते हैं, ओके आई एम फीलिंग रियली ग्रेट. यस. और जब हम पर्टिकुलरली किसी चीज से परेशान होते हैं, ओके आई एम सैड, सो यू एक्सप्रेस इट लाइक दिस. देन आप सोचते होंगे कि पर्टिकुलरली, नॉट आप बट पर्टिकुलरली हम लोग ये सोचते हैं कि ओके कम्युनिकेशन मीन्स बोलना, लिखना, तब अपनी बातों को एक्सप्रेस करना. But communication is also about your body language. Okay, so how you use your body language. If I say hi, I'm using my hand to wave at you, so वो particularly communication को और meaningful बना देती है. So this is what we learn in our particular block 1. Then comes our next block, that is block 2. So block 2 deals with the world around us. So there in our day to day lives we have several needs and desires जो हमें कन्फ्रेंट करने होते हैं. मेजर और माइनर प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करना, और वो हम शेयर करते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, उनको डिस्क्राइब करते हैं हमारे. so like in unit 2 we describe daily events to some person. Okay, like could be our family, our friends, कैसे उनसे बात करना. Okay, how to express needs of a child in a family. So all these things would be covered, and moreover you will also get to know about
money matters, that is you will get to know about the vocabulary ऐसी जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस के बारे में जाना आजकल बहुत जरूरी हो चुका है। तो उसकी vocabulary से आपको मतलब और ज्यादा ग्रो कराया जाएगा, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट, how to particularly understand or discuss issues related to finances in this particular unit. And the next one is public services. तो इसके इस particular unit में आप सीखेंगे कि how to particularly you make use of public services, maybe booking a ticket at railway station, how to ask an agent to particularly help you out, how to order anything, how to volunteer for an NGO, how to take initiatives and communicate your particular needs in this unit. You will get to know. And another one here is our particular block 3 that deals with media and entertainment. So media is really important for our day-to-day lives now, and it has become part of our life. बिल्कुल पार्ट ही बन चुका है। अभी तक हमने सीखा कि कैसे हमारी सारी चीजें मतलब रीडिंग्स को हम करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, बट दिस ब्लॉक विल डील विद ultimate to immediate ideas of environment, greetings, introduction, family, and how to particularly deal with media से कैसे particularly deal करना है, और शॉपिंग और पर्टिकुलर ऐसे एरियाज जहाँ पे हम कहीं ऐसे जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे आप मीडिया से डील करेंगे, शॉपिंग करेंगे या एंटरटेनमेंट का रोल होगा। सो दिस इज व्हाट वी पर्टिकुलरली डील इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, and it will have the first one here is the media. So media in terms is high technology that covers both print and electronic media, and that is the means of mass communication. उसी के जरिए हम सारी चीजों को जान पाते हैं। कोई चीज हो रही है कहीं दूर किसी देश में, तो हम उसे अपने देश में कैसे जान पा रहे हैं, सिर्फ मीडिया के थ्रू। So in this module you will get to know about vocabulary, TV, and whatnot. So there are so many things to learn in this particular module. And the next is the floating markets of Thailand. So there is this module that is included that will help you to read an exploratory piece and understand the main points of Thailand markets, make inferences from the text, and to understand patterns और उनको generalize करना सीखना। And no, also there is a particular unit, the next unit, that is people at work. इस यूनिट में हम सीखेंगे कि कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, टीवी न्यूज एंकर्स डिस्क्राइब करते हैं लोगों को, उनके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज देयर इन जर्नलिज्म। तो ये सारी चीजें आपको इस मॉड्यूल में देखने को मिलेंगी। एंड द स्मेल ऑफ फूड डील्स विद रीडिंग of a particular play and understand the basic stories, एक टेक्स्ट में से इन्फ्लुएंसेस को समझना, लुकिंग फॉर पैटर्न्स, जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे हमें समझना है, हाउ टू यूज, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस ऑफर्स, दैट वुड बी डील इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। Next comes block 4, burning issues. So here burning issues no, हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हॉट चलता रहता है, टॉपिक्स चलते रहते हैं जिनको हम डिस्क्राइब अपने मतलब जो भी हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या किसी एकेडमिक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिस्क्राइब करना हमें पड़ता है। मे बी देयर इज अ डिबेट, so if you want to take part in that, you need to particularly know about the burning issues whenever we are giving a speech and any other thing. So burning issues are really important in that case. So here first one is social injustice, so that you will understand here that how social injustice is caused by prejudices, differences जो आ जाते हैं कास्ट में, क्रीड की वजह से, आपके कलर की वजह से, जेंडर की वजह से, इनके बारे में हमें जानने को मिलेगा with help of various stories of Premchand, and there would be essays. You will get to know कि हम कैसे essays लिख सकते हैं सोशल करंट अफेयर, पर्टिकुलर अफेयर्स जो भी अभी चल रहे हैं उनके ऊपर। यू विल हियर you will listen to a speech and also answer questions on it. Next here plays role of make peace not war. So peace is really important. Of course war is not a good part of our life. So here you'll get to know, read diary entries, उनको comprehend करना, war के बारे में जानना, peace के बारे में जानना, डायरी एंट्रीज को लिखना, इन्फ्लुएंसेस टेक्स्ट में से लेना, उनको समझना, उनको कॉम्प्रीहेंड करना, एंड टू राइट एंड डिलीवर अ स्पीच we will get to know here. So young leaders are really important. Through them we get to know कि एक अच्छा लीडर कैसे होता है. You will understand a reading passage on leadership qualities that will वो आपकी हेल्प करेगी vocabulary को improve करने में. You will learn and practice direct and indirect speech in this unit.
Another one is doing away with exams. So exams की जब बात आती है, so you will get to know from an opinion about evaluation systems in school, और उनमें कैसे evaluation होता है, whether exams are important or not, and you will get to know about the vocabulary of examination through this module. Now the one, so this particular course, now let's discuss कि course किसके लिए particularly designed है. So ये course designed है उन learners के लिए जो daily life की conversation करना चाहते हैं English में, but they face hurdles कि हम कैसे उसको communicate करें. तो जैसे कि हमने देखा different blocks में there were units that were particularly based on daily life, daily burning issues, daily life issues, communicating with friends, family, and vocabulary of different particular events. So you will get to know, and it will help you improve your English not only in reading or speaking part, but reading, listening, writing, and speaking. So all of the 4 areas would be covered under this particular course. You will also learn vocabulary, day-to-day life examples would be given to you under the course. So there are also an enhances that you will also understand how to read a comprehension in a nicer way. That would be taught to you when you will be reading the passages or comprehension in this. Moreover, vocabulary enhancement is really strong. So in this, you will get to know a lot more of words which you can write in your notebook and understand them well, and then use them in your daily life. Moreover, practice is really important. So you just keep in your mind, if you really want to learn, just have a notebook with you, have pen or pencil, whatever is required. Keep on writing, do writing practice. There are several samples you can correlate to, and they will help you out in this. There are certain guidelines which are there for you, that please don't go for immediate answer checks. Okay, just wait, analyze, and then try to rematch your answers. So this was it about the course. I hope you liked the course introduction and you understood that what is there in this particular course. So see you all in the classes. Thank you. Bye bye.